Welcome dear students of class 6. Welcome back to your chemistry class. This is Vikas Supal, your chemistry teacher, with a new topic and very interesting topic of your chapter number 2 about matter. और बेटा ये क्वेश्चन जो है, whenever you will get an exam test of chapter number 2, whenever it's there, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा. That is kinetic theory of matter. But before we get into that, let's try to understand the meaning of the word kinetic. कि kinetic word का meaning क्या है? तो बेटा कोई भी चीज which is moving, we can call that thing kinetic. Moving का other word kinetic है. तो अगर कोई भी body जो moving है, the energy possessed by a moving body, we would say that it has kinetic energy. So obviously the body which is not moving, which is still stationary, has zero kinetic energy. Now, having understood the meaning of the word kinetic and kinetic energy की definition जो है हम जैसे जैसे आपकी क्लास बड़ी होगी इसको और रिफाइन कर देंगे. पर अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई बॉडी मूविंग में है तो उसके पास kinetic energy है. ऑल्सो रिमेंबर, कोई भी मैटर हम लेते हैं, चाहे सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसके जो पार्टिकल्स हैं जिनसे वो बनी है, अल्टीमेटली हर चीज जो है किसी छोटी चीज से बनी है. लाइक ह्यूमन बॉडी, वी आर मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स. ऑर्गन सिस्टम आगे ऑर्गन से बने हैं, ऑर्गन आगे टिश्यू, टिश्यू से आगे सेल, सेल को हम एक बेसिक एलिमेंट्री यूनिट ले लेते हैं. वैसे ही कोई भी मैटर, all these matters that you see around you, which we have already discussed, they are also made up of some kind of small particles. ठीक है, वो small particles जो हैं they are always moving. तो बेटा प्लीज रिमेंबर, हमें लगता है कि ये सॉलिड स्टेट में डस्टर, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये वुड से बना है तो वुड के पार्टिकल्स they are moving. अब उनका मोशन डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड में कैसा, लिक्विड में कैसा, गैस में कैसा. बट यही सारी चीजें हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में देखनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, द वेरी बेसिक पॉइंट व्हिच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी मींस वेरी स्मॉल, इनविजिबल, व्हिच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आईज पार्टिकल्स, जिनको हम आगे जाके देखेंगे. हम उन पार्टिकल्स का नाम, किसी को हम एटम्स के नाम से जानेंगे, किन्हीं को मॉलिक्यूल्स और आयंस. एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको इसी चैप्टर में थोड़ा सा, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में हम करवा देंगे. बट आयंस would come follow later. But till that time, better please remember this word ions. Second point, particles of different substances. For instance, chalk, duster, ये रबर का बना हुआ, ठीक है, ये बोर्ड, these are all different substances. इनके पार्टिकल्स जिनसे ये बने हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, शेप में, साइज में, मास में. एंड वाइस वर्सा, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सेम सब्सटेंस के हैं, फॉर एग्जांपल वुड, तो वुड सब्सटेंस सेम है दोनों में, हालांकि देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बट द पार्टिकल्स का साइज, शेप और मास बेटा दोनों केस में सेम होगा बिकॉज दे आर ऑफ सेम सब्सटेंस. आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दैट. Moving onwards, it's quite understandable that particles which are like smaller in size, they move faster than the bigger particle, but there is one condition: at a given temperature. Temperature को change नहीं करना. Then we will observe that the small particles move faster than bigger particles. Bigger particles थोड़े lethargic, आराम से मूवमेंट करते हैं, क्योंकि बिगर पार्टिकल का उनका मास ज़्यादा है. तो ये कहने का मतलब ये है कि जिसका मास कम है वो जल्दी मूव कर लेंगे, जिनका मास ज़्यादा है वो लेट मूव करेंगे. पर टेम्परेचर कंडीशंस सेम रहनी चाहिए दोनों की
when you are comparing both of them. But if we increase the temperature, the kinetic energy of whether it's solid, small particle या big particle, उनकी kinetic energy आगे से increase होगी ही होगी. That means the movement of particle would become faster. ठीक है? And vice versa. If you decrease the temperature, then the kinetic energy of the particles would decrease. Kinetic energy बेटा पार्टिकल की डिक्रीज करेगी तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो ज्यादा मूव नहीं कर रहे, ज्यादा kinetic एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे से दूर जाते हैं. Always remember that. So when we are increasing the temperature, the kinetic energy increases. Also, the particles move faster and they move away from each other. For decreasing the temperature, kinetic energy decreases and they come closer. ठीक है? In solids, the particles only vibrate about a fixed position. For example, if we have to say, जैसे ये एक पोजीशन है, ये particles बस इस fixed position के अराउंड इस तरफ ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे. ठीक है? Why is that? Because the particles are very close to each other in solids. And why is that? Because of strong intermolecular force of attraction. Strong intermolecular force of attraction जो है उन molecules को पास पास रखती है, जिसकी वजह से उनमें space बहुत कम होता है, और उस space कम होने की वजह से they are only able to vibrate about a fixed position. Now, if we notice in liquids on the other hand, the particles can roll or slide over each other. Why? Because the gap between the liquid particles is a little more than solids, क्योंकि उनकी intermolecular force of attraction थोड़ी weak होती है solid से, and as a result they possess more kinetic energy than solid. अगर मैं कोई substance लेता हूँ उसकी solid state, ठीक है? For example, iron अगर solid state में है तो उसके particles जो बहुत fixed position पे ऐसे vibrate कर रहे हैं, ठीक है? पर अगर मैं उस आयरन को मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में ले आऊं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की, सब्सटेंस सेम है आयरन, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है? इन गैसेस हाउएवर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम. तो बेटा मैं फर्दर अगर हीट करता रहूं तो हम वी कैन ऑब्टेन वेपर्स ऑफ आयरन. ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वाटर को ही हम वेपर बना सकते हैं. आपको सॉलिड सब्सटेंस है, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. आप उसको मेल्ट करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाता है वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा आयरन. अगर आप उसको फर्दर हीट करते हैं तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वो हीट अप होकर वेपर्स बन जाएंगे. ऐसे ही हम बहुत सारे मेटल्स हैं, सोडियम के वेपर्स या फिर गोल्ड के वेपर्स आप बना सकते हैं. आप गोल्ड मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में ले आइए and then you can obtain vapors. So in gases, however, a step further and the kinetic energy of particles is maximum. Please remember that. That is why the particles of gases are moving randomly, which means not fixed direction, and with a high speed in all the direction. The particles are always moving. इसीलिए गैस जो है उसकी स्मेल बहुत दूर तक हमें दूर से ही आ जाती है अगर उसकी फ्रेगनेंस है. ठीक है? So these are the 7 points which are related to the kinetic theory of matter, which you should remember at all time. ऑर्डर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सेकंड की जगह थर्ड आ गया, थर्ड की जगह सेकंड पॉइंट लिख दिया, बट उसको ज्यादा वो उस चीज के बारे में वरी नहीं होना. तो these points and the meaning should remain same. Now beta, as we have discussed that I told you about iron, gold, and let's talk about the universal substance which everybody knows, water. So we have seen water, all of you, in all the 3 states of matter. हमने water को ice के form में देखा है, which is solid. हमने उसको liquid water which we drink, which we use for bathing, cleaning, for many other purposes. And we have seen water being used as steam also while cooking is one fine example.
तो उसमें अगर हम देखें, look at this symbol which looks like a triangle. It is called delta. It is a symbol of heating. तो ये आप एरोस देखोगे, ये एरो इस तरफ शो कर रहा है, ये एरो इस तरफ शो कर रहा है। वो ये कहने का मतलब है कि ये आइस, ऊपर वाला एरो जो हीटिंग के लिए है, अगर आप चाहते हैं आइस हीट हो तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इट वुड बिकम वाटर. But if you want to reverse the reaction, go backwards, then the downward arrow comes into picture. So that means water on cooling becomes ice. ठीक है? तो जल्दी जल्दी से ice forward reaction heating से water, water नीचे downward arrow cooling becomes ice. Similarly, water heating becomes steam, vapor which is in vapor form. Steam on cooling changes into liquid water. So the crux of the story is any substance which is in its solid state has the least energy. उस substance को ही अगर उसकी liquid state में हम ले आए, it possesses more energy than solid state. उसी substance को change into gas would have maximum kinetic energy, maximum energy out of these three states for that particular substance. So with that, we come to the end of a very important topic that we discussed. Please go through this video lesson, subscribe to the video so that you keep on getting videos on time and without any wait. Till that time, stay safe. I will see you soon. Take care. Bye-bye.